So I guess we are live now. So hi everyone, welcome to Weekend Live with Cypher Schools. So to brief it out, we actually do a live workshop every weekend. So this time we came up with a data structure and algorithm concept. So we have a guest this time, that is Aman sir. So yeah, hi sir. Hi Sanskar, hi everyone. Hi sir. So am I audible properly? Yes, you are. Okay, cool. So before getting start with this workshop, so I'll introduce you. Like Aman sir is he worked with Microsoft as a SDE. So sir, like what's your experience working as a SDE at Microsoft, Yeah, and so what I worked exactly? at Yeah. Microsoft. Um, so I joined Microsoft like 1 year back. Okay. Um, I am a IT Roper graduate, so I got Yeah. campus placement. From there, I joined Microsoft, and the journey has been full of normal development journey, that Okay. like nine to Okay. five journey that happens. And meanwhile, I just got connected with Cypher Schools for delivering whatever I have learned so far. Okay, great, sir. Great. So, sir, like before moving forward with this entire workshop, so everyone is hyped up about data structure and algorithms. So, अगर छोटे शब्दों में बात करें, what exactly data structure and algorithm is? So, as the name suggests, data structures. So, Yeah. basically, it's like various types of containers we have to store water. Mm-hmm. We have a bucket, we have a small glass, we have that bowl. Mm-hmm. Similarly, to store data, there can be various structures. We can have the data lined up in a linear type. We can have Okay. data in the form of a tree, like Mm-hmm. the normal hierarchy. We can have data in the form of randomly placed, so in memory, like linked list. So Mm-hmm. similar to that, data structures means various types of containers for data. Like how do we want to store data? Linear fashion, tree fashion, Okay. random fashion. What type of and algorithms? After storing data in various types, how do we want to operate on them? What to do with Okay. that data? So algorithms are a way to operate on that data to get something meaningful. That's it. Okay, sir, great. So, sir, if I'll talk about data structure and algorithm, so अगर practical life में example ले उसका, so actually I am also a computer science engineering student. So it's like कि practical life में where I should implement it. कोई live example के साथ अगर आप बता सको. So in practical life, like in day-to-day life, Yeah, mostly if you all of us use apps and yeah, applications, various applications, websites. So internally, how they are implemented, that's one way to okay, see data structures and algorithms. Because with the data growing so much over the internet, like in yeah, Facebook or in some other ways, so we have to get some algorithm to work on that data, right? So yeah, just give me a minute, I'll be back in 1 minute. yeah, yeah, no issues, no issues. Okay, so okay, guys. So, sir will be back in 1 to 2 minutes. Meanwhile, I'll introduce you few of our like product. So last time we introduced the resume part. I hope you guys are aware about it. So basically, we actually provided a platform where you can build your resume from scratch. Either it's based on the beginner one, experienced one, or we can say about the modern one. So you can visit there also. Apart from that, so every weekend we used to do a workshop. So this time we came up with data structure, and next time it will be like it's on demand. If you want other workshop apart from this topic, so we can surely do for that. Hi sir. Yeah, sorry for that delay.
So like I was talking how to get some practical reference. Yeah. So using all these applications and websites like these social media applications, so we Mhm. have the amount of data that gathers is in TB, hundreds of Mhm. terabytes, so that, so it's not very easy to operate on them. So there we can, gather such algorithms, and there we can apply these algorithms to deliver meaningful things in right amount of time. Yes, sir. Yes, sir. So, sir, there is a doubt. It's like we have DSA and DAA, that is data analysis and algorithm. So, like in my college time, there were two subjects. That is data structure and algorithm, and DA, that is design analysis and algorithm. So, like how they are different, yeah, we can say it's related. So DSA and DA, that's a nice question. So basically, if we talk about DSA, it Yeah. focuses more on the development part, to show something, to um, more developmental, like developing applications, showing them in websites, more on like whatever has been developed, we need to apply that to create something. But Okay. as the name suggests, in data analysis, it is for the companies, not for Mm-hmm. the customers, right? Data Okay. analysis, it's not for the customers. We don't see the results by ourselves. So like Facebook or Microsoft or Google, they need to do data analysis to Mm-hmm. develop softwares. Ki what is the need, how much, like if Google now wants to develop a chat application, then they Yeah. can see ki how much is the involvement, what is the market cap, what is the market size, and there things like data analysis can help. Mm-hmm. And after the results of that data analysis is complete, then Google can start working on such applications. So data Okay. Okay. analysis is more for the company side, so that they can decide what to work on, and data Yeah. structures is more like in the development phase, like how to develop Okay. application. Okay. Okay. Okay, sir. So, sir, if we'll talk about data structure, so sir, इसको start कैसे किया जाए? Like how to put the पहला step or the first step toward the data structure and algorithm. So the first step is always the most important step. Yeah. So if I'll share my journey, and that way it may be Yeah. helpful. Sure. So Yeah. Yeah. Sure, sir. when a person joins, when we join our college in the first semester, it's always like um, a whole range of Mm-hmm. topics are thrown to us. We can do mobile development, app development, we can do website development, we I can guess, learn sir, DSA. your internet is a bit slow. There is some lag between your video. Oh, it's okay. Uh, Yeah, let me see. yeah. Let me know if it gets fine. Okay. Yeah. Yeah. Sure. Sure. I guess now, no, still Is there's a it lag. fine now? No, no, there's some lag. Now it's okay, I guess. Yeah. Okay, great. So yeah, so I was talking about what happens in the first semester. So Huh. I was also thrown to that domain. So initially I started with app development because there was so much craze for Mm-hmm. App Store, Google Store. Huh. But Yes, sir. when the reality strikes, when you come to know that company is my placement, तो DSA से Mm-hmm. ही लगेगा, such things. Correct, correct. So then I started coding in the, like, after 1 year, after Okay. exploring things, and Uh-huh. then I came to know that okay, DSA will help me get placement, which is my priority. Okay. So the journey starts with a language. Okay. Which language you want to code on? So there are Mm-hmm. mainly four choices: C++, Java, Python, and JavaScript. Okay. Okay, so for DSA, mostly the first three are used. Mm-hmm. Now it's always a debate, like whether to choose Python or C++, because Java is Mm-hmm. not at all recommended to start with, because Okay. it's way more complicated for beginners. So it's always Okay. a Huh. debate.
for Python and C++. So it depends on the learner. Both Mm-hmm. languages are just okay, but I will always recommend C++. Although Mm-hmm. I know all these four languages, but I will always Okay. recommend C++ because uh, it gives you a feeling of coding. Python is just like English language, so Mm-hmm. it may not suit you well, but C++ Yeah. is a mix. It is easy to understand, and it at the same time it is diverse enough to keep you engaged. Okay, Correct. so Correct, sir. that is about C++. After, okay, so first is to pick the language. After Mm-hmm. picking the language, start with the basics, like what is the syntax. Practice basic questions like the famous hello world question. Yeah. Practice loops, if else, conditional statements, data types, Yes. operators, basic mathematics, functions, and such stuff will come. These are all the basics part when you are Huh. learning a language, learning the syntax. Okay, so if I'll just iterate these topics, so things will start with data types, operators, then conditional statements, then loops, then functions, then you go to arrays, and then the Correct. DSA topic. Okay. 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 So learn the syntax well, and where are those? What is the best platform for learning syntax? Because you need resources in the journey, Correct. right? Correct. It's not like you are going to read a book now. You have Mm-hmm. picked up a book on C++ and you started reading the lines. It's not like that. Correct. It's much more easy than that. Mm-hmm. So then you will the best platform for learning the syntax and such things are Yeah. HackerRank. Obviously, everyone knows about that. After learning the language and its syntax, finally you come to DSA, and then you start with very simple data structures like arrays or list, linked Correct. list, Mm-hmm. arrays, linked list, stack and queues, and such things. And slowly you learn these data structures, and then there are two paths you can ride on: the path of competitive programming or the Huh. path of DSA, like Mm-hmm. complete DSA. So we Correct. can talk about these things as the workshop goes, like where Huh. should Huh. you go. And Correct. yeah, this is how it starts. Pick a language, learn the syntax, begin the basic DSA, Mm-hmm. and then I'll give you platforms where you can practice more coding questions and hone your skills. Okay. Okay, sir. Sometimes, sir, actually, still your video, there is a lag in video, sir. Okay, maybe I can connect my VPN. Yeah. Yeah, is it any way better? So your audio is clear. There is lag in video, sir. Let Mm. me change my Wi-Fi. Let me change my Wi-Fi. Okay. Okay. Okay, sir. I guess it's fine now, sir. Is it better anyway? Yeah. Yeah. It's much better, sir. Okay, I just changed my network. Okay. Okay. Okay, so that's the journey that you should start. Okay, okay, sir. So we'll start with the workshop, sir. Let's Yes. say we'll start with few of the topics, then we move out. If someone have the doubt, they can directly comment, and we'll show the comment, and you can answer the question. Meanwhile, everyone is telling good afternoon, sir. Hi, sir.
It's like Yeah. Sunil Kumar Yadav, then Keshav Kumar. They are Keshav telling is hi, here. sir. Yeah, yeah. Hi. Okay, so I can then start with the workshop. Yes, Um, sir. okay, sure. If there is, you want to share your screen? Yeah, yeah. Okay, I'll add your screen. Yeah, it's Okay. visible now, sir. Okay, so let's get started. So just to keep things simple, I think I should write down the points as well so that it's somewhere stored. Okay. So when it comes to data structures, so what are the prerequisites to starting data structures and such things? First is um, you should know a programming language and its syntax. Okay. Now, where to learn a programming language and syntax? I just told you about HackerRank. In HackerRank, you know, yeah. So yeah, in HackerRank, you can see there are various, language-based pills are here. So you can pick any language and then you can learn a language in a particular format. So see, basic input output in C++, data types, conditional statements, for loop functions, and all such beginner topics are given here. So just learn about these beginner topics using HackerRank and you know a YouTube channel for lectures, and you are good to go. Okay, so that is the prerequisite that you should have. After that, what are the various data structures that you have to cover? Okay, because uh, when you start a path, when you know ride along a path, you should know that what you are going to encounter while the journey continues. Okay, so the various topics that you should be well versed with, I'll just write it down. Okay, so arrays are there, linear data structures that everyone starts with. Okay, then strings are there. Strings are sequence of characters, much similar to arrays. Then linked list. Then you have stacks and queues. So whatever I'll write here, that is exhaustive, you can assume. Okay, if you just practice these many data structures, you are good to go. You are well prepared for any coding interview or for sitting in any placement round. So that the list that I'm writing here, that is exhaustive. So stacks and queues, then heaps, okay, then hashing, then comes trees and binary search tree, AVL tree, and graphs. Okay, so these data structures you have to learn. Okay, if you want to be proficient in data structures. Now, where to learn all these things, that we will discuss along in the workshop, but this is what you have to cover. Now, under graphs there are various things. Graph is a very big topic. Okay, so various topics, like you should understand um, terminologies like what is a node, what is an edge, what is degree of a graph, what is directed and undirected graph. Okay, these things, directed and undirected graph. What do I mean by connected components, etc. So you should be familiar with these terminologies, and this should not confuse you in any path ahead. Okay, so be well versed with these terminologies. After that, graph representations, like how to represent a graph. So there are two famous ways of representing a graph, like adjacency matrix and adjacency list. So just Google these things. Okay, how to learn these? I'm just writing the topics. Just Google these things, see 2 or 3 tutorials, and you're good to go. Nothing special in these things. Okay, the main thing that's important is, after knowing the basics of these data structures,
practice questions on these data structures. And I'll tell you the platforms where you can practice questions. So the main key to success or to cracking a job is practice the questions. Do not waste time on the theory. Practice questions. That's important. Okay. Gather practical knowledge. Gather knowledge of how to approach a problem. Okay, so just know the basics from a blog, from any YouTube video, from any website, and then just jump onto the questions. Okay, so these are the data structures that you have to understand. Okay, so um, much of these data structures you can find in any YouTube video. Okay, but there are platforms as well. So syllabus for data structures. Now comes the algorithms part, okay, which are very important for your placements. So syllabus for algorithms. So there are various algorithms. You may have heard a little a name, one or two, like greedy algorithm, dynamic programming, recursion, backtracking, and whatnot. But what is the exhaustive set that I'll be providing you? Okay. So learning these many data structures is good enough. What is the list of algorithms you should know? You should definitely know. So those are, um, first of all the sorting algorithms. Okay, merge sort and quick sort are must. Okay, and there are much more like bubble, insertion, etc. Sorting algorithms. Then you should know greedy algorithm. What is greedy algorithm? Then backtracking, then divide and conquer, then comes sliding window technique, then binary search, KMP algorithm, which is a string matching algorithm. Okay, then some specific algorithms like Euclidean algorithm for GCD, sieve of Eratosthenes. Okay, then comes recursion, and finally dynamic programming. These are the algorithms for non-graph data structures, or these are applicable to graphs as well. But there are specific graphs algorithms as well, which are very much important. What are the graph algorithms? So you should know DFS, BFS, right? Depth first search and breadth first search. Then some shortest path algorithms, जैसे कि Dijkstra algorithm, Bellman-Ford algorithm, and last one is, let me see, Floyd-Warshall algorithm. So these are shortest path algorithms you should know. Then comes MST. This is a special concept in graphs, minimum spanning tree. इसके लिए भी कोई YouTube video you can easily find. Okay. So minimum spanning tree पे दो algorithms होते हैं, Kruskal and Prim's algorithm. These are MST, minimum spanning tree algorithms. Then comes topological sorting. There is a Kosa-Raju algorithm for that. Okay, so don't think that, don't get devastated or afraid of seeing these names. These are very simple things. These involves loops only, but a particular in a particular fashion. These involve simple concepts like loops or recursion only. But when it comes to graphs, they operate in a particular fashion and gives you desired results. So don't get afraid by seeing the names. It's very simple. You can cover each of these in about 1 or 2 hours. Theory is
coverable in such short span of time. You know, just 1 2 hour to each algorithm and you are done. Okay. Okay, let me complete these and then we can discuss the platforms where we can learn these. For cycle detection algorithms, we have like DFS can be used for cycle detection. Union find algorithm. Then comes the final one, Ford Fulkerson algorithm. Okay, so this is the syllabus for algorithms. If you know these much algorithms and you have practiced at least 20 to 25 questions of each type, you will find yourself changed. Like you will be more informative, you will be more, will have more knowledge, such things. Okay, so this is what I have to discuss for the syllabus part. Okay. It's like agar we can share this file in the comment section, so those who joined late they can see the syllabus part easily. They can refer it. Yes, so I In the comment box. I'm not able to paste here. Do Sir, I need there's an to type? option for private chat. You can paste there. I can push it to the main comment section. Sure. Yeah. Okay, so these are the syllabus. If I just talk about UPSC in between, so syllabus is the most important part for cracking anything. You should know the range of topics that you have to cover. I'll give you like in my time of 1 year when I was very much focused on data structures, I covered all these things. Okay, all these things like every I covered the theories in like 1 or 2 hours only, each of the theory of each of these topics. But then I practiced a lot of questions, 50, 60 questions of each type. Then you gather these skills, you can solve any problem, you get intuition, that sixth sense everyone talks about कि देखते ही समझ आ जा रहा है, okay, ये प्रॉब्लम है, आई हैव टू अप्लाई स्लाइडिंग विंडो लगाना है इसमें, समझ आई बात? अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम है स्ट्रिंग का, अच्छा इसमें इन्वर्शन नंबर लग सकता है. सो व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यू अंडरस्टैंड कि what to apply at what place. But again, you cannot jump directly to problems, otherwise you don't know any theory and you are directly solving problems. That will be like रटने वाली बात, yeah, this is the way, this is the way. No, you should be clear with the basics. Okay, and what all things you have to cover before jumping to problems, these are the things. You can find blogs on each of these topics everywhere on the internet. There are various YouTube videos. Just go through these and gather enough theory and then jump to the questions. Okay. ठीक है. So, it's like I have a few of the question that is based on data structure. So, sir, it's like if we'll talk about data structure, mehi, there are different types, right? The array is there, linked list is there, then stack queue is there. So those are, I guess, it's the linear, right? Linear data structure. If we'll go to non-linear data structure, so what are the non-linear and linear data structure? Yeah, so non-linear is basically trees, binary search tree. And any graph is an example of non-linear data structure because the nodes of graph are stored anywhere. They're just connected to each other using pointers, things like Yes. that. More examples can be, you know, um then there are just different implementations. Like Mm-hmm. tree में AVL tree we have red black tree, RBT जिसे कहते हैं. Then we have Mm-hmm. Fenwick tree, we have Fibonacci heaps. So these are just Mm-hmm. variations of these graphs only, graph data structure, but they are for specific purposes. Like Mm-hmm. those purposes are time efficient होना चाहिए systems, right? Correct. Correct. So उसके लिए different different तरह के बनाए गए हैं. For different situations we have different data structures.
हम्म। सो लीनियर में व्हाट यू सेड, नॉन लीनियर में ऐसे फिर आ जाते हैं। ओके ओके। तो सर इट्स लाइक एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन टाइप का था, लाइक आई स्टार्टेड विद डेटा स्ट्रक्चर। तो कुछ टाइम तक आई डिड डेटा स्ट्रक्चर, लाइक स्टार्टेड फ्रॉम अरे, देन मैं धीरे धीरे स्टैक पे मूव हुआ, क्यू पे गया। जाते जाते इट्स लाइक मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि इट्स लाइक थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लाइक ऐसा हो रहा है, तो मैं कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दिया था। फिर जब मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा था तो इट्स लाइक कि थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि ऑल ऑफ द सडन क्या हो गया, न्यू सा पूरा लग रहा था कॉन्सेप्ट सारे। हाँ, तो सो या yeah, I got उसके लिए। everyone हाँ faces this problem in the journey. हाँ। I also started like second semester me. I started coding, seeing my friends. They हम्म were doing problems on Code Forces platform, but then I did for 1 or 2 weeks, but हाँ। then I left it because maybe I was not able to solve questions because I was not मेरा theory उतना clear नहीं था. Then I ओके। left to solving problems. Then after the second semester, when I started again in the third or fourth semester, I felt left. I felt lost. कि हम्म। क्या पढ़ा था, कहाँ है, कुछ याद नहीं है, such things. The हम्म। problem is not that you have lost something. The problem is the gap. Why you are creating a gap? हम्म। It is because the journey is not interesting enough for you. That's why you are opting out, right? So हाँ we हाँ। should focus on something that can be interesting for us. That way only we हम्म। can reach the peak. So I'll be talking about how to make this journey interesting as well. Okay, हाँ। so syllabus is complete. Maybe we हम्म। can talk about the journey right now only. Okay, let's start यस श्योर with. सर, श्योर सर, आई विल शेयर योर। या। So let's say that you understood little bit about all these things, like understood the theory from some platform like HackerRank or some YouTube video. Now where to practice questions, right? That because that's the most important thing that I just told you. Practice questions for cracking any exam. Practice questions. So then comes platforms like Codeforces or CodeChef or AdCoder. Okay, these platforms will keep you engaged, will keep you, will keep your journey interesting enough. So what happens in these platforms, let's discuss a little bit, because here actually the world of coding starts with these platforms. If I'll add a few more names, we have lead code here. Okay, so let's start with the journey. Okay, so let's see what's happening in code forces right now. Okay, so in 4 days we have a contest. Okay, now there is a concept of contest. You guys know about what is a contest? Sunil, Keshav, Harsh, what do I mean by a contest? Okay, no issue. So contest is basically, contest is an event. जैसे जेई एडवांस होता है ना, कि आपने बहुत कुछ पढ़ा 2 साल तक, देन फाइनली जेई एडवांस में 3 आवर्स के विंडो में यू हैव टू शोकेस योर स्किल्स। उसमें क्या होता है, 2 साल के बाद एक एग्जाम होता है। सिमिलरली अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कैट वगैरह भी होते हैं, सिमिलरली कोडिंग में भी ऐसे इवेंट्स होते हैं। बट डिफरेंस क्या है, ये इवेंट्स बहुत कम स्पैन में होते हैं। लाइक हर दिन कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, हर सप्ताह कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, हर वीकेंड कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है। साइफर स्कूल से भी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। So these contests will keep you engaged. Okay, various times these contests have prizes as well, but we will not go to that part. But the thing is, after you are well versed with these topics, basics clear hai, then you should attempt these contests. हर हर 2-3 दिन में यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होता है। लाइक सी, ये 29 ऑफ जून में कॉन्टेस्ट हुआ था 2 घंटे के लिए। 24 जून में कॉन्टेस्ट हुआ था 2 घंटे के लिए। सो ये कॉन्टेस्ट क्या होता है, कॉन्टेस्ट में यू विल बी गिवन 5 to 6 क्वेश्चंस टू सॉल्व इन 2 आवर्स।
Okay, so you have 2 hours, you have 5 to 6 questions. You have to try, to solve those questions. That's it. And on the basis of your performance, after the contest, a rank will be given to you. ओके, सो नाउ समवन विल से कि सर अभी तो स्टार्ट किया है, अभी एग्जाम देना शुरू कर देंगे, व्हाट विल हैपन? अभी तो 5 क्वेश्चंस में एक भी नहीं होंगे, इससे डीमोटिवेट हो जाएंगे वगैरह वगैरह. So same thing happened to me. So in the second semester, I knew nothing, but I saw my friends doing code courses. So I also started giving these contests of 2 hours. Okay, हर वीकेंड में होता है, 2 घंटे के लिए होता है. मैंने भी देना शुरू कर दिया, बट मेरे से एक भी सवाल नहीं होता था. ओके, सो दैट वाज रियली डिमोटिवेटिंग फॉर मी, जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया ये सब पढ़ना. ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ्स ऐप डेवलपमेंट शुरू कर दिया था. सो देन अगेन जब फोर्थ सेमेस्टर में शुरू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि छोड़ना नहीं है. व्हाट हैपेंस इज, कॉन्टेस्ट दिया आपने, सो लेट्स इंटर वन ऑफ दिस कॉन्टेस्ट. ये मेरा एक कॉन्टेस्ट हुआ था 29 जून को. एक भी सवाल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं. कॉन्टेस्ट देने के बाद आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को देखो यहाँ पे ट्यूटोरियल से. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन, यू हैव entered the question, at the bottom you will get a tutorial. और समझो कि क्या आंसर है उसका, कैसे इसने आंसर निकाला. ऐसे ही करते रहोगे ना, जस्ट कीप डूइंग दिस फॉर 1 or 2 months. प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नो इश्यूज, कॉन्टेस्ट खत्म होने दो, ट्यूटोरियल पढ़ो, समझो कि क्या सोचना था एंड व्हाट यू वर नॉट एबल टू थिंक. ऐसा 1-2 मंथ्स तक करते करते यू विल बी एबल टू सॉल्व द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस. यही तरीका होता है, कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है दैट एक दिन में पी के यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ऐसा हो ही नहीं सकता. कम हियर, see the question, you are not able to solve, no problem. After the contest ends, see the solution, try to understand the solution, और उसे याद रखो कि हाँ ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे. That's it. In 15 days, 1 month, you will be able to solve these 2 questions. And that's how the journey starts. That is how you start solving questions. That is how you jump into the ocean of questions. Now here you will find 10,000 questions, different topics पर. Okay, so this will keep your journey interesting. क्योंकि क्या होगा, अकेले मत करो, 3-4 लोगों का ग्रुप बना लो, 3-4 लोग साथ में दो, साथ में सॉल्व करो. कहीं भी जा रहे हो डिस्कस करो साथ में कि हाँ ये प्रॉब्लम तूने कैसे सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम अच्छा मैंने ऐसे सॉल्व किया था, ऐसे सोचना था. सो दिस विल मेक योर होल जर्नी इंटरेस्टिंग. मजा आने लगेगा सॉल्व करने में. और जब मजा आने लगता है, देन यू डोंट नीड एनीथिंग, देन everything happens on their automatically. So the main thing is why you are getting bored, because you are not giving these contests, you are not practicing questions. Just start giving these contests, the journey will be beautiful. ओके ग्रेट था. ये तो आपने मतलब सही बोला था. लाइक एक सर्टेन टाइम के बाद वी फील लाइक कि क्या हो रहा है, कि मतलब कुछ समझ नहीं आता है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फील लाइक बोरिंग. सो उसको एक होता है ना किक स्टार्ट वी कैन से, और वी कैन से एक पुश देने के लिए. सो डेफिनेटली वी नीड टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन कॉन्टेस्ट हो गया, या फ्रेंड के साथ चिट चैट हो गया इन टर्म्स ऑफ किसी भी क्वेश्चन पे हो गया, या हाउ टू सॉल्व दिस. तो या अकेले नहीं करना है, अकेले में हाँ बोरिंग हो सकता है. कोई भी एक फ्रेंड तो होता ही है. हाँ पिक करेक्ट. करो, लड़की हो लड़का, डजंट मैटर, पिक, स्टार्ट थिंक. करेक्ट करेक्ट सर. तो सर इफ विल जैसे हम लोग दूसरे डोमेन्स में भी बात करते हैं, विल टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट होता है, या फिर आपका ये अपार्ट फ्रॉम वेब डेवलपमेंट देयर आर फ्यू थिंग्स जैसे डेटा साइंस होता है, या फिर डेटा एनालिस्ट, जो भी डोमेन होता है. सो दे हैव प्रोजेक्ट्स, वी कैन से कि हाँ आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्या किया है. सो अल्टीमेटली आता है कि हाँ आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, आई एम अ बैक एंड डेवलपर तो मेरे पास ये. So in terms of that, apart from doing practice, what we can do with DSA? Yeah. So
Actually, I'll tell you again something about myself. I'm a Microsoft engagementee as well. So Okay. Microsoft में every year there is a mentorship program, Microsoft Mhm. Engage, its name. उसमें क्या होता है? Some students are selected on the basis of a MCQ test. ठीक है, Okay. सेकेंड ईयर वालों के लिए होता है, एक Mhm. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट. सो Okay. what happens is, for second year students in the fourth semester maybe Mhm. MCQ राउंड होता है फर्स्ट में बेस्ड ऑन DSA. Okay. अगर वो MCQ राउंड क्लियर हो गया, देन फॉर 1 मंथ यू आर गिवन अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कि ये Okay. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाओ. वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है. डिजाइन Mhm. वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, डिजाइन सुडोकू सॉल्वर, डिजाइन Mhm. पाथ फाइंडिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट बना दो, टीम्स Mhm. एप्लीकेशन का एक डेमो बना दो, सच थिंग्स, Mhm. चैट Got it. एप्लीकेशन बना दो. तो 1 मंथ टाइम मिलता है इसमें बनाने के बाद. ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू हैव डेवलप्ड द प्रोजेक्ट, द आउटकम, यू आर गिवन इंटर्नशिप. होता है ना, Okay. इंटर्नशिप थर्ड Mhm. ईयर में मिलता है. सो वो Uh-huh. इंटर्नशिप मिलती है, एंड देन इंटर्नशिप से PPO, such things. So Okay. you see, from second year, Microsoft Engage, Uh, internship, PPO, entering into okay. Microsoft from second year itself. So that is actually my path. Okay. I got to Microsoft using second year में Engage से enter किए, then internship Mhm. लगी, then PPO हो गया. Okay. Great cool sir. That is one of the paths. So Mhm. DSA फिर भी आना चाहिए. You see, the entry to this journey is DSA. The DSA. blocker is the DSA. So just learning something development based, like केवल अगर web development कर लिया, then also it's difficult. But yeah, Mhm. development is very important. The, Correct. Correct. learn some things like HTML, CSS, JavaScript, backend में Node.js सीख लो, और Mhm. एक React सीख लो. This Uh-huh. much is enough to develop any website, right? And Mhm. learn सीख लिया, then it's awesome. So Uh-huh. just focus on HTML, CSS, JavaScript, maybe MERN. Done. MERN is Okay. best, but if you don't want to go that much deep, because these things also take up time. So learn Mhm. simple things like HTML, CSS, JavaScript, Node.js or React. बस. ओके. तो सर लेट्स से अभी किसी का स्टार्ट हुआ है कॉलेज, या फर्स्ट ईयर वाले हैं या सेकेंड ईयर वाले हैं, तो व्हाट्स योर आइडिया, नो व्हाट्स योर, क्या कहना होगा आपको उनके लिए इफ दे वांट टू स्टार्ट जर्नी विद कोडिंग? सो So डायरेक्टली first of all, डीएसए में घुस जाए या फिर व्हाट? हाँ. Yeah, so if you have decided that कि कोडिंग ही करना है, because हाँ. कॉलेज में जाने के बाद there are various other things you can do as well, but हाँ, हम्म. if you are a CS background and कोडिंग ही करना है अगर, then first thing is to start with DSA. No other thought, because कहीं भी अदर जाओगे, अगर अगर माइंड में है कि you have to get placement, then DSA, nothing else. ओके. Okay, placement लेना है, ओके. DSA. But again, start with the basics. You have a lot of time. Don't waste time on, like I wasted a lot of time in the first year. Almost my हम्म. first year was wasted in exploring options. I हम्म. dived into app development, I dived into website development, but at the end I realized कि ठीक है, development is will help you up to a certain level. When it comes to placement, it's DSA. So start with the basics in the first, like after the first month, हम्म. just cover basics. Learning a programming language in the first year, enough. कोई दिक्कत नहीं. That's enough. हम्म. So in the first year, at least learn a programming language. That should be your goal. Programming language should be strong, hold होना चाहिए. हम्म. I know this programming language. फिर second year से automatically when you learn a programming language, फिर DSA में automatically you will enter. And हम्म. what everyone lacks is guidance. करेक्ट. करेक्ट. Guidance is after learning the basics, like learning a programming language, what's next, कहाँ पे जाऊँ next. Next हम्म. is just come to these places, code forces or code कोड chef. फोर्सेस. These ओके. will keep you engaged for 1 year. एक साल ओके. तक बस कोड फोर्सेस करो और कोड शेफ करो, और फिर हम्म. थर्ड ईयर में इट इज 100% श्योर यू विल गेट इंटर्नशिप. So ओके. ग्रेट सर. first year mein you have two things to do. First is हम्म. learn a programming language, and second is हम्म. learn basic website development. बेसिक्स.
हम्म You can do these two things. Second year में रिएक्ट सीख लो एंड देन हम्म कोड फोर्सेस पे सारा टाइम दे दो एक साथ. थर्ड ईयर में यू ओके विल एंजॉय द फ्रूट्स. okay so sir we have a question from Anup Kumar that is लास्ट ईयर में then what happens? so sir if someone are in last year then what they do तो हाँ उनके लिए क्या श्योर. कहना है सर Yeah, it happens. So because for me also, for many of my friends, journey started in the third year. Okay, हम्म so I have talked to them regarding how they approach, because they have very less amount of time, and when time is less, it becomes much more, yes stressful, sir because placements are near. You are not up to your batchmates. Such competition arises. So last year, May, if you have don't have much time, all I will say is, like what they did, they had almost like 1 year. हम्म So if you have something like 6 months kind of time, then still you can. If you don't know any of these data structures, then that's a problem. You have to know these data structures. Okay. और इन्हें कवर करना ऐसा नहीं है कि each data structure will take 5 days or 10 days. हर डेटा स्ट्रक्चर समझने में मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 day लगेगा. दैट्स इट. समझने में, ओके, थ्योरी. हम्म आफ्टर दैट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो अनुप, अच्छा आई से कि देर इज कोई मैजिकल सोल्यूशन है नहीं. ऑल यू कैन okay डू इज practice questions from whatever platform you can. The best platforms that I can provide you. If the time is less, definitely you should do lead code. Okay. हम्म क्योंकि आखिरी टाइम में लीड कोड ऑलवेज हेल्प्स. सो कम टू लीड कोड, go to the problem section, and here apply the filter here. So here you can apply, a lot of topics are available. हम्म Apply the filter and solve the questions. Okay, there is okay no other way. Solve the questions. टाइम कम है, एक दिन में 20 क्वेश्चंस करो. 10 hours लगाओ, 12 hours लगाओ. That's all you can do. okay so तो सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं लेट्स से हैव अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर में हाँ, arrays ही है. सॉरी Arrays, अरेज arrays. ओके अरेज But ओके again, ओके we हाँ don't go like that. It's like कि एक problem आया, then you have हम्म to decide कि कौन सा data structure use करना. ओके तो एंड सर ये डेटा स्ट्रक्चर मतलब हाउ जैसे ये होता है ना कि इम्पैक्ट क्या होता है प्रोग्राम के एफिशिएंसी पे डेटा स्ट्रक्चर का तो हाउ वो कैसे डिसाइड होता है क्या इम्पैक्ट आता है Okay. So ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. हाँ सर Screen present, हाँ हाँ please. सर Okay, it's present. या So let's say that arrays और linked list को देख लेते हैं. हाँ हाँ सर Let's say you want to store this data. You have a series of numbers 5, 10, 6, 22. You want to store this data somewhere. Okay, इस डेटा को स्टोर करना है बस. 5, 10, 6, 22 एंड 17. तो दो तरीके हैं. एरे में स्टोर कर सकते हैं, सिंपल एरे में 5, 10, 6, 22 एंड 17. या फिर लिंक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं. लिंक लिस्ट में कैसे स्टोर करेंगे? क्रिएट अ नोड फॉर 5, create a node for 10, create a node for 6, create a node for 22, and create a node for 70. Or her, and you can create these linkages as well. Like the node for 5 will point to the node for 10, node for 10 will point to the node for 6, and so on. Okay. अब यहाँ पे see, I had to store this data, and I have two options.
या तो एरेज यूज कर लो या तो लिंक लिस्ट यूज कर लो। बट अब आता है टाइम पर इम्पैक्ट बढ़ेगा। लेट से मुझे एक्सेस करना है 22 को। आई वॉन्ट टू एक्सेस द द मेमोरी लोकेशन वेयर 22 इज स्टोर्ड। सो अगर आप एरेज यूज कर रहे हो, then you can directly write like this. So let's say this array is ARR and this is head. So to access 22, you can directly write ARR of how much? 3. Just writing this, you can now print or operate on 22. Okay, so this is order 1 time. कांस्टेंट टाइम में एक्सेस हो जाएगा। जैसे कि मेमोरी में कहीं भी स्टोर्ड है 22 इस एरे के एरे में, यू राइट ARR3, कांस्टेंट टाइम में इट विल बी एबल टू एक्सेस 22। पर लिंक लिस्ट में इफ यू वांट टू एक्सेस 22, देन यू हैव टू इटरेट लाइक दिस। हेड को क्या करना होगा, यू हैव टू इटरेट टू ऑल द नोड्स इन बिटवीन। Okay, so that will take about order n time. N is the size of data that you have stored. So see, I had to store this data. I had two options, arrays and linked list. Arrays में अगर data store किया है then access करने में order 1 time लगेगा। but अगर linked list में data store किया है तो access करने में order n time लगेगा। so this will impact the final solution कि कितना time का solution बन रहा है। Okay, okay, sir. So we have a query, sir, that is from Abhishek Jha. Like he's asking, sir, if anyone in third year and not good in coding, what should I do? ओके, सो थर्ड ईयर के बिगनिंग में अभिषेक या लास्ट में? I guess last होगा अभी। ओके, थर्ड ईयर, दिस इज मई राइट, जून। जून या जून इज फर्स्ट भी हो सकता है ना अभिषेक। एनीवेज, आई टेल इन जनरल कि अगर कोई फोर्थ। थर्ड ईयर में है देन व्हाट यू कैन डू। थर्ड ईयर में है देन यू हैव 1 year ऑफ टाइम। ओके, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आपको रियलिटी स्ट्राइक कर गया है एंड यू स्टिल हैव 1 year ऑफ टाइम। दैट यू शुड बी लाइक, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि बहुत लोगों को रियलिटी स्ट्राइक करता है फोर्थ ईयर में एंड दैट इज द वर्स्ट फेज दैट एनीवन कैन बी। ओके, थर्ड ईयर में है तो कूडोस, आपको समझ आ गया है। इंटर्नशिप अच्छी नहीं लगेगी, मान लो कि खराब इंटर्नशिप लगने वाली है। आई विल नॉट गो एट द नंबर्स लाइक कितने Okay. स्टाइपेंड हो गए एंड ऑल दोस थिंग, बट एज्यूम कर लो कि इंटर्नशिप खराब लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप 2 महीने की होती है या 6 महीने की होती है। इट्स नॉट प्लेसमेंट जो कि आपका 2-3 साल कैप्चर करेगी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप, प्रिपेयर फॉर द फाइनल प्लेसमेंट विच इज 1 year अहेड। ऐसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले सारे ये जो मैंने सिलेबस लिखा है सबका बेसिक समझ लो। आई होप लैंग्वेज आता होगा, कोई ना कोई लैंग्वेज आता होगा। जो भी लैंग्वेज आता है, पाइथन या C++, सबका बेसिक कोई भी यूट्यूब वीडियो से समझ लो कि एरे का बेसिक क्या होता है, स्ट्रिंग का बेसिक क्या होता है, कैसे स्टोर होता है, सच थिंग्स हैकर रैंक से सीख लो। ठीक है, 1 साल है, 6 मंथ कुछ मत करो। 6 मंथ का कितने डेज होते हैं? 180 डेज होंगे। 180 डे में पर डे कोड फोर्सेस में 10 क्वेश्चन करो। पर डे अगर 10 क्वेश्चन कर लिया आपने इन 180 डेज में, 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, फोर्थ ईयर में अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। टाइम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। फोर्थ ईयर वालों को ये सोल्यूशन नहीं दे सकते बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है कि वो आके यहाँ पे 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करें, पर आपके पास टाइम। So if you have become enough serious, come here, solve at least, every day solve 5 questions for 3 to 4 months. You will find yourself in a great place after 1 year. Okay, so sir, we have one more question from Kunal. So he's asking, like, right now I am in MCA and first year has been completed. I had started coding 3 days ago on this platform. I'm not so good in coding, and So, and yeah, conceptually I know things, but problem is implementation part. Kunal, so
डोंट गिव अप राइट नाउ. एटलीस्ट जब मैंने शुरू किया था, सो व्हाट हैपेंड टू मी, मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ तक कोड फोर्सेस में क्वेश्चंस कर रहे थे. एक महीने, 1 मंथ तक. ओके, एवरी डे आई यूज टू सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस स्टार्टिंग फेज में. फिर भी मुझसे कॉन्टेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था. इट वॉज रियली डिप्रेसिंग फॉर मी, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था. इवन आफ्टर गिविंग एवरी डे 2-3 hours. अब मेरे दोस्तों से हो जाता था शुरू के 2 क्वेश्चन, तो मेरे से नहीं हो रहा था. डोंट गिव अप. पहली बात, अकेले मत करना. कम से कम 3 फ्रेंड्स खोज लो. ओके, सो अगर कुणाल, इफ यू वांट टू, प्लेसमेंट्स इज गोइंग, कमेंट्स. Commence after August of day one हाउ मच? companies. सो एमसीए फर्स्ट है. हाउ मच टाइम ड्यूरेशन कितना होता है एमसीए का? आई गेस 2 ईयर दो होता है ना? साल होता है, हाँ 2 साल होता है सर एमसीए का. सो कुणाल, देन यू हैव 1 year राइट फॉर प्लेसमेंट. ओके, सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू, कम से कम एक फ्रेंड रखो साथ में. 2 years है ना? ओके, यू हैव इनफ टाइम. डरने Correct. वाली कोई बात नहीं है. 2 year है आपके पास, इट्स इनफ टाइम. अकेले मत करना. टेक अ फ्रेंड और टू, उनको साथ में लो, और सब साथ में बैठ के, एक ही रूम में हॉस्टल में रहते हो, सब साथ में बैठ के whenever you get time every day 5 questions यहाँ पे करना शुरू कर दो. कॉन्टेस्ट, याद रहो, कोई भी कॉन्टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए. एक भी कॉन्टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए. अगर मैं आपकी जगह में होता तो मैं इसे टारगेट कर रहा होता. जून 6 को ये कॉन्टेस्ट देना है. कोड फोर्सेस के बारे में अच्छे से पढ़ लो यूट्यूब में, कैसे देते हैं कॉन्टेस्ट, और देना शुरू कर दो. हाँ, ओके कुणाल. सो एक भी कॉन्टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए. ओके, मिस हो गया देन दैट्स अ ब्लंडर. डोंट मिस अ कॉन्टेस्ट. हर दिन रात में होता है 8 बजे. सो आई होप कि रात में कोई काम नहीं होता हो. So every day 8 p.m. it happens. Every day, sorry. Every weekend, और you have to keep checking. जैसे मैं हमेशा चेक करते रहता था, अगला कॉन्टेस्ट कब है, अगला कॉन्टेस्ट कब है. Such things. Okay. Okay. ओके, आई होप कुणाल सर ने आपका मतलब डाउट और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया होगा. एंड सर, लाइक एक छोटा सा क्वेश्चन था, कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो क्या एक्चुअली होता है दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा स्ट्रक्चर? So um, so this is one of the beginner topics. अगर कोई, करेक्ट. ओके, कुणाल, जस्ट सजेस्ट यू कि डीमोटिवेट नहीं होना, गिव अप नहीं करना. जस्ट फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म ओनली. ओके, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना. कोड फोर्सेस देख लो और कोड शिफ्ट देख लो, इनफ है. ओके, ठीक है. टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सी, हाउ डू यू कंपेयर? इट्स मोर लाइक कि आप दो एल्गोरिदम्स को या फिर दो कोड्स को कंपेयर कैसे करोगे. ठीक है, मान लो कुणाल ने एक कोड लिखा है और अनूप ने एक कोड लिखा है. ओके. ओके, कुणाल ने जो कोड लिखा है वो C1 है, अनूप हैज रिटन कोड जो C2 है. इन दोनों में से कौन अच्छा है, कैसे डिसाइड करेंगे? ओके, C1 अच्छा कोड है, मान लो. यू हैव टू फाइंड, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से आई हैव गिवन अ क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, कुणाल ने अपना कुछ सोचा और उससे कुछ कोड लिखा C1. अनूप ने भी सोचा कि अच्छा n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, n को इनपुट में लेंगे. ओके, ठीक है, अनूप ने भी कोड लिखा C2. अब इन दोनों कोड्स में से अच्छा कोड कौन है? व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स टू जज अ कोड, पीस ऑफ कोड, राइट? तो दो पैरामीटर्स है. फर्स्ट पैरामीटर इज टाइम. कौन सा कोड कम टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में. दूसरा पैरामीटर है स्पेस. कौन सा कोड कॉन्टेक्स्ट में कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट? मान लो कि आपने एक ऐसा कोड लिखा है जिसमें आप एक एरे बना दे रहे हो 1 TB साइज का. आपने एक ऐसा कोड लिखा जिसमें आप 1 TB साइज का एरे बना दे रहे हो. ओके, तो वो कोड कितना भी अच्छा हो, वो तो चलेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि हो सकता है सिस्टम में 1 TB हो ही नहीं स्टोर करने के लिए.
तो दो पैरामीटर्स होते हैं correct, कोड को जज करने के लिए. व्हाट आर दोस टू पैरामीटर्स? टाइम एंड स्पेस. ओके, so we have two parameters to judge two algorithms or two pieces of codes: time and space. Here comes time. अब टाइम की जब बात करते हैं तो इन दोनों का टाइम कैसे मेजर करेंगे? क्या मेरे पास एक एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? एक मशीन लो, दो मशीन लो, M1 और M2. M1 में C1 को चलाओ और M2 में C2 को चलाओ और देखो कौन पहले एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हो जा रहा है. जो पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है वो टाइम कम ले रहा है. दैट मीन्स वो अच्छा कोड है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम है. बट ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि मैं पहले कोड को रन करूंगा एंड देन आई विल कंपेयर टू कोड्स कि अच्छा कौन कम टाइम ले रहा है एंड देन आई विल डिसाइड कि विच कोड इज बेटर. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट. ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हाँ, राइट कुणाल. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि हाउ मच टाइम योर कोड इज टेकिंग फॉर a given input size. Okay, so I won't write it here because it will take time, but yeah, I can write few things here. I've explained about contest, and remind me, I have to explain one more thing. Up solving का concept क्या होता है? Okay, it will be helpful for all of you. Contest and up solving. Contest मैंने oh, समझा दिया है already. okay sir, Up solving मुझे समझाना है. Okay, okay sir, I'll remember. so time complexity अपन. Okay, so time. So basically इसका definition अगर बात करें, so it determines the running time of an algorithm as a function of input size. Okay, running time of algorithm as a function of input size. कि अगर इनपुट में अगर मैंने एक एरे दिया है और एरे का साइज 10,000 है तो कितना टाइम होगा? एरे का साइज अगर 50,000 है तो कितना टाइम लगेगा? ओके, सो ये रिलेटिव है कि इनपुट साइज कितना है और उस इनपुट के लिए कितना टाइम ले रहा है एल्गोरिथम. ओके, एग्जांपल ले लेते हैं. सबने सुना होगा ऑर्डर एन एल्गोरिथम. ऑर्डर एन का क्या मतलब है कि अगर मैं इनपुट साइज को डबल कर दूंगा तो रनिंग टाइम भी डबल हो जाएगा. ऑर्डर एन. ओके, सो आई जस्ट राइट इट. इफ इनपुट साइज इज डबल्ड then running time will also be doubled. ठीक है. और सुना होगा ऑर्डर एन स्क्वायर एल्गोरिथम. इसका क्या मतलब है? इफ इनपुट साइज इज डबल्ड then running time is how much it will be? It will be increased by 4 times. Input size अगर डबल करेंगे तो running time will be increased by 4 times. Okay, because 2 का स्क्वायर is 4. सिमिलरली अगर इनपुट साइज को ट्रिपल करेंगे तो रनिंग टाइम कितना से इंक्रीज होगा? 9 times. Okay, so this is what time complexity tells कि अगर इनपुट साइज ऐसा है तो रनिंग टाइम कैसा होगा and such things. Similarly, space complexity. Space complexity क्या है? On the basis of the input size, how much space your code is taking in the hard disk. Hard disk में you know ना, जब भी आप जैसे अपने प्रोग्राम में आपने एक एरे बनाया है. Okay, so can I create an array here? Yeah, so I take a class in Cypher Schools, so उसमें ये सब डिस्कस हो रहा है.
Anyways, so so if you have अपने जो आंसर है आपका कोड में, you have created an array. So let's say first you have taken a piece input and then you have created an array of size n. तो पता है ना, ये जब आप ऐसे क्रिएट करते हो तो क्या होता है, हार्ड डिस्क में कितना बाइट्स ऑक्यूपाई होता है? एनीवन रिमेंबर्स? व्हेन यू क्रिएट दिस एरे, हार्ड डिस्क में कितना मेमोरी ऑक्यूपाई होता है? ईट स्लीप कोड वाज दिस। ओके, सो ये सब जानना जरूरी है, बिकॉज यू नो समझने में एक किक है, समझने में अच्छा लगता है. सो व्हेन यू राइट दिस, हार्ड डिस्क में n इंटू 4 बाइट्स ऑक्यूपाई होता है, n इंटू 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी. आई होप एवरीवन नोज व्हाट डू आई मीन बाय बाइट्स. सुना है ना, जीबी, सब कोई भराते हैं अपना मोबाइल डेटा, 2 GB ऑफ हाँ. डेटा. तो Yes, sir. सिमिलरली जब जब अपन ऐसे लिखते हैं इंट ARRN, सो बेसिकली अपन हार्ड डिस्क में इतने बाइट्स ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. सो अगर आप देखोगे, तो अगर मैंने ऐसा कोड लिखा है तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है? ऑर्डर एन स्पेस. Mm-hmm. क्यों ऑर्डर एन स्पेस? क्योंकि अगर मैं एन को 2n कर दूं तो मेमोरी कैसे हो जाएगा? 2 इंटू एन इंटू 4. कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा? तो देखो, एन डबल किया तो मेमोरी भी डबल हो गई. Mm-hmm. दैट मींस ऑर्डर एन है, लीनियर एंड लाइक दिस. सिमिलरली अगर आपने ऐसे डिक्लेयर किया है एरे को, देन व्हाट इज हैपनिंग? आप इतना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हो, एन स्क्वायर मेमोरी, एन स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स, 4n स्क्वायर मेमोरी. तो इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर मैं n को 2n करूंगा तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा? 4 इन, सो 2n इंटू 2n इंटू 4, दैट मीन्स 4 टाइम्स what was occupied earlier. Okay, so that's why space complexity is order n square. तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता है कि n बिट्स, हर्ष नो n बिट्स नहीं, अगर आप एरे डिक्लेयर करते हो इस तरह से तो 4n बिट्स, 4n बिट सॉरी 4n बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाई होता है. ओके, बिट्स में जाएंगे तो अगेन 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एनीवेज, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली टेल्स यू कि इनपुट साइज के बेस, अगर मेरा इनपुट साइज n है तो मेमोरी कितना ऑक्यूपाई होगा, एंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अब आते हैं, ओके, सो दिस इज फॉर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ये बहुत बेसिक है, अगेन डीप में जानना है, सो यू हैव टू फॉलो रिसोर्सेज. साइफर स्कूल्स के प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगे, इन जनरल ब्लॉग्स मिल जाएंगे. Okay, if you want to know more about these things. Now, last thing that I'll be talking about in this, um, workshop is upsolving. Upsolving बहुत ज़्यादा important चीज़ है जो कि सब कोई मिस करते हैं. Even I was missing during my first 2 to 3 months. और ध्यान रहे, ये सारा कॉन्टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं अगर आप अपसॉल्विंग नहीं कर रहे. अपसॉल्विंग क्या होता है? अपसॉल्विंग मीन्स कि मान लो आपने ये कॉन्टेस्ट दिया, 2 घंटे मेहनत करके आपने इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा, जो भी हो सकता था सोचा, प्रॉब्लम हुआ या नहीं? गिव मी जस्ट अ मिनट. Oh, just a second, guys. Sir will be right back in 1 2 minutes. Meanwhile, if you have any doubt regarding so far what we discuss, like Sir discussed in the session, so you can ask. It could be anything based on DSA or any queries. So Sir will be more happy to answer your queries. That's one back. It happens because you are at home, so you have other responsibilities as well. No Anyways, issues. so I was talking about upsolving. So आपने कॉन्टेस्ट दिया, आज रात को मान लो कॉन्टेस्ट है, 8 बजे बैठ के आपने पूरा कॉन्टेस्ट का 2 घंटा वेस्ट किया.
क्योंकि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, सो बेसिकली इट इज अ वेस्ट, यू डिडंट, यू वर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, आपका 2 घंटा व्यर्थ हो गया। ध्यान रहे, क्वेश्चन हो या ना हो, 2 घंटे बैठना है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग, बैठे रहो, सोचते रहो क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 2 घंटे वेस्ट किया, पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ। प्लेट जब कॉन्टेस्ट एंड कर जाएगा, तब इसका सॉल्यूशन को पढ़ना है, और पढ़ के कोड करके वापस से इसे सबमिट करना है। Okay. वापस से सबमिट करना है और उसको सही कराना है। ओके, सो आई गिव यू एन एग्जांपल। तो जैसे ये कॉन्टेस्ट बहुत दिन पहले हुआ था, आई विल एंटर दिस कॉन्टेस्ट, मैं नहीं कर पाया पहला क्वेश्चन, नो इश्यूज। मैं क्या करूंगा, मे बी एंटर करने के बाद यू कैन सी, हाँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉपरली इसे सॉल्व करूंगा। मैं इसका ट्यूटोरियल देखूंगा पहले तो, मुझे कुछ मेरे से समझ नहीं आ रहा था, मैं ट्यूटोरियल देखा, मैंने लॉजिक समझ लिया, अच्छा ये लॉजिक था, ऐसे अप्लाई करना था, ओ। देन मैं जाऊंगा वीएस कोड में, वो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करूंगा प्रॉपरली, और फिर सबमिट करके इसे सही करवाना है कॉन्टेस्ट के बाद। इसी को कहते हैं अप सॉल्विंग, मतलब जो हुआ नहीं वो कॉन्टेस्ट के बाद कर रहे हैं। ये सेम चीज पहले 2 क्वेश्चंस के लिए करना है। ओके, ऐसे ही करते जाओगे, तब जाके यू यू विल इंक्रीज योर स्किल्स, राइट। क्वेश्चन नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर नहीं होने के बाद उसे वापस से सॉल्व करना है सॉल्यूशन देखकर। दैट वे यू विल इंक्रीज योर थिंकिंग कैपेसिटी। ये करना मत भूलना। Sure, sir, sure. So I guess आज सर इट्स लाइक इट्स मोर देन इनफ, या कि नहीं तो फिर ज़्यादा वो हो जाता है ना, कि सेम जो मेरे साथ हुआ था डीएसए में, कि इट विल बी लाइक कि थोड़ा कंटिन्यू होते जा रहा फील लाइक कि तो ओके अब नेक्स्ट क्या, ऐसे वैसे करके। सो आई गेस आज के लिए वी कैन लाइक एंड द सेशन टुडे, and meanwhile agar if anyone have doubt, so we can stay, we can sir will be more happy to answer those doubts. So anything we या have in the chat so far? So far we don't have. Meanwhile, what I'll do, I'll drop your LinkedIn account, sir, in community as well. So if किसी को भी doubt होता है regarding DSA or anything, so he or she can directly approach to you. So it will be more helpful for them. या And फ्रॉम आपके साइड से सर लास्ट थिंग आप ये बताओ कि व्हाट टू अवॉइड, कि अगर कोई डीएसए स्टार्ट कर रहा है तो अवॉइड क्या क्या हो जाना चाहिए जिससे उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। फर्स्ट सो इज डूइंग प्रैक्टिस रेगुलरली, अपार्ट हाँ, फ्रॉम प्रैक्टिस तो दैट। रेगुलर। हाँ, डोंट वेस्ट वेरी मच टाइम ऑन थ्योरी। थ्योरी पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है कि एक एल्गोरिदम को एक दिन तक पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम वन हाँ आवर तक। और फिर सिंपली सर्च कर लो, जैसे कोसा राजू एल्गोरिदम पढ़ा ग्राफ का, हाँ हाँ। पढ़ो उसको 1 आवर 1.5 आवर मैक्स। उसके बाद सिंपली सर्च कर लो कोसा राजू एल्गोरिदम क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस करो, वो 5 क्वेश्चंस ज़्यादा समझा देंगे एल्गोरिदम के बारे में, rather than हाँ हाँ। spending 5 hours on the algorithm। तो करेक्ट थ्योरी पे करेक्ट सर। कम टाइम वेस्ट करना है, क्वेश्चंस पर मोड ज़्यादा फोकस रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रेंड सर्कल अच्छा से बनाना कि सबको इंटरेस्टेड हो। कोई भी इंटरेस्टेड हाँ नहीं हुआ तो वो दैट विल मेक थिंग्स ऑकवर्ड मे हाँ, बी। थोड़ा सा वो हो जाता है इनबैलेंस टाइप से। और अकेले मत करना। मैंने अकेले किया था, सो आई लेफ्ट इट क्वाइट अर्ली। बट मेरे दोस्तों ने ग्रुप में किया था, सो आई सॉ देम मच मोर, दे अटेंड मच मोर ग्रेटर हाइट्स देन मी। सो सो ग्रुप में सर, इज देयर एनी प्लेटफॉर्म कि लेट्स से अपार्ट फ्रॉम कोड फोर्स इज देयर जहाँ पे डेली कॉन्टेस्ट आता है, तो ऐसा कोई हाँ, कोई कम्युनिटी है प्रोसेस वेयर में वी कैन गो एंड आस्क, कोई डाउट होता है तो? डाउट वगैरह इसी में आस्क कर सकते हैं, जैसे ये मेरा कोड फोर्सेस है। हाँ हाँ। डाउट लेकिन अच्छे से आस्क करना, पहले सोच लेना, अपने आसपास लोगों से ही पूछ लो। ज्यादा से हम्म। सिचुएशंस में योर सराउंडिंग विल गिव यू द आंसर। अगर नहीं आता है देन यू कैन क्रिएट अ ब्लॉग हियर। ओके। इसमें ब्लॉग बना सकते हैं, मे बी हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। ब्लॉग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मे बी अकाउंट में जाना हम्म। एंड हियर, एक सेकंड में बताता हूँ। जैसे मैंने बहुत टाइम पहले एक ब्लॉग डाला था। हाँ हाँ।
Mm-mm. Where is it? सो इट्स लाइक कि जो भी एरर्स आते हैं, जो डाउट होता है, वी कैन क्रिएट अ व्लॉग काइंड ऑफ अ थिंग। फिर जो जिनके पास इनका सॉल्यूशन होता है या फिर दोज हु नो अबाउट इट, दे कैन आंसर, राइट? हाँ, ये भी है कि हाँ, अच्छा हाँ, वैसे अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना कि मतलब एरर नहीं सॉल्व हो रहा है, तब तो एक हम्म। एक डिफाइंड यहाँ पे एक जगह है, जैसे वो मैं बोल रहा था ना ट्यूटोरियल में जाने को। हाँ 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 ट्यूटोरियल हाँ। में चले जाओ, उसके अंत में कमेंट डाल दो, कोई ना कोई बता देगा। ओके जैसे ये ओके ओके। ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल के अंत में आओ, यहाँ पे देखो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट हम्म। कर दो। बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, ओके लेकिन आंसर ये, ठीक ओके है ना? ओके। और कोई ना हाँ कोई हाँ। कर ही देगा, क्योंकि उससे आप वोट मिलता है, तो कोई ना कोई कर हम्म। देगा। और फिर कोर्सशेफ में भी ऐसे ही रेगुलरली कॉन्टेस्ट होते हैं। और हम्म। अगर ज़्यादा ही कॉन्टेस्ट देने का मन हो तो @coder.jp एक प्लेटफॉर्म, ओके। @coder ये तब दो, मतलब कि अगर अब मन नहीं लग रहा और कॉन्टेस्ट देना है तब। हाँ अदरवाइज ये हाँ दोनों काफ़ी है, कोड फोर्सेस एंड कोर्सशेफ। मैं हाँ। लास्ट क्लास में देने लगा था बिकॉज मुझे और कॉन्टेस्ट चाहिए था, तो ओके @coder भी अच्छा प्लेटफॉर्म। ओके ओके। सो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डिस्कशन यही होगा कि प्रैक्टिस अ लॉट, एंड इफ कहीं स्टक होते हो तो टू टेक हेल्प फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, एंड लेटर ऑन फर्स्ट, मूव कर सकते हैं कि लाइक आस्किंग फ्रॉम अदर पीपल। कोई ना कोई होंगे सराउंडिंग में हु कैन हेल्प। हाँ या। ओके। सो आई गेस आज का सेशन इज यहाँ पे डन, मतलब एंड करते हैं। एंड इट्स रियली नाइस सेशन सर, लाइक बहुतों के क्वेरीज आए, दे आर आस्किंग देयर डाउट्स इवन फ्रॉम द जर्नी पार्ट से भी लेके हुआ, लाइक हाउ टू स्टार्ट डीएसए, या फिर क्या होना चाहिए। इवन आपने जो एक सिलेबस काइंड ऑफ अ थिंग बनाया, दैट आई शेयर्ड इन द कमेंट सेक्शन, मीन वाइल मैं उसको रिफाइन करके विल पुश इन आवर लिंक्डइन एंड कम्युनिटी एज वेल। सो दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर फ्रॉम डीएसए, तो वो कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, ओके एंड ठीक। थैंक्स अ लॉट सर, मतलब सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव रहा, लाइक मज़ा आया सेशन में, टू बी ऑनेस्ट सर। ओके, ठीक है, नाइस, सेम टू मी। ओके ओके, सर। सो दैट इज़ ऑल गाइज, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई विल प्लान आउट एज पर योर डिमांड, इफ़ यू हैव एनी थिंग रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट पे बातचीत करना हो या फिर कोई स्पेसिफिक डोमेन कवर करना हो। अगर सर आपको भी कुछ है, लाइक इफ़ यू वांट टू टेक अ वर्कशॉप रिगार्डिंग रिस्पेक्टेड टू अदर डोमेन्स ऑल्सो, तो वी आर ओपन सर। श्योर, वी कैन कनेक्ट फॉर दैट। Sure, sir. Okay, guys. So have a nice day. We'll meet you in the ओके। next workshop. Bye, sir. Bye, everyone. Bye.